Hello students. Today we are going to learn about the centralization and decentralization. Centralization means concentration of power in one hand and decentralization means distribution of power in many hands. So go through the detail. So centralization refers to concentration of power or authority in few hands, generally at the top level of management. An organization is centralized when the decision making authority is in hands of top level management only. हमने ये प्रिंसिपल भी पढ़ा है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। वहाँ भी हमने यही पढ़ा था कि अगर डिसीजन मेकिंग जो है, जो डिसीजन लेने का अधिकार जो है जब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही होता है तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। Decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. जब हम पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर टेकिंग डिसीजन एट एवरी लेवल में, दैट इज मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. Under decentralization, every employee working at different levels gets some share in authority. Decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. So, whenever any decision making occurred in that time and when the different levels of management are created, the managers decide in advance whether the organization is fully centralized or decentralized or a mix of both of them. Sometimes company follow a mixed policy of centralization and decentralization. They keep the important matters such as financial decision, structural decisions with the top level management only and share the common decision with the people working at different levels, as generally an organization can never be completely centralized or decentralized. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो डिसीजन टॉप लेवल अपने पास रखता है, जो रूटीन डिसीजंस हैं उसे डिफरेंट लेवल को दे दिया जाता है. मीन्स द मैनेजर्स वर्किंग एट द मिडल एंड supervisory level, they can also take the decision at their level for effective operation of their department. So the organization can never be completely centralized or decentralized. Now the features of decentralization. Centralization is much more than a mere transfer of authority to lower level. यानी कि जिसमें हम पावर टेकिंग अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल तक के मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं. It implies selective dispersal of authority. It shows the belief that people are competent, capable and resourceful. और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोअर लेवल पर तो वहाँ का जो मैनेजर्स है वो कम्पिटेंट होने चाहिए, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने वाले होने चाहिए. Decentralization indicates that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decision. और मिडिल और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको भी पावर दिया जाता है ताकि वो अपने लेवल पर जो भी वर्क हैं उनको प्रॉपरली फॉलो इम्प्लीमेंट कर सकें, सही तरीके से वर्क को परफॉर्म करा सकें. Decentralized recognize the need of authority for decision makers. The top management carefully select those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be written at higher level. So before the power are distributed to the middle and lower level, ठीक है, तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि कौन से ऐसे पावर्स जो हैं उन्हें अपने पास तक रखने हैं और कौन से ऐसे पावर्स जो हैं अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिडिल और लोअर लेवल तक असाइन करना है ताकि वो अपने अपने जगह पर डिसीजन ले सकें. नाउ after understanding the concept of centralization and decentralization, now what is the relationship between delegation and decentralization? Decentralization is the extension of delegation, क्योंकि डेलीगेशन में भी हम अपना पावर शेयर करते हैं सबॉर्डिनेट के साथ, डिसेंट्रलाइज में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना पावर मिडिल और लोअर लेवल के साथ शेयर करता है. तो फिर इन दोनों में रिलेशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2, यानी कि डेलीगेशन क्या है जिसमें दो लोगों के बीच में पावर शेयर होता है वो डेलीगेशन है. एंड वेयर इज इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाई मैनी,
और डिसेंट्रलाइज क्या है, जिसमें अथॉरिटी या पावर जो है दो से एक यानी कि दो से ज़्यादा लोगों से शेयर होता है, ठीक है, मैनी पीपल्स। Because systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralized। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग जगह पर देते हैं तो इसलिए उससे मैचिंग अथॉरिटी भी आप शेयर करते हैं। तो जब आप मैनी पर्सन्स को अथॉरिटी शेयर करते हैं फॉर टेकिंग द डिसीजन, तब वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है। If delegation is restricted to certain levels only, then there will be no complete decentralization also। और ये भी है कि अगर मान लीजिए आप डेलीगेशन को सिर्फ कुछ लेवल तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते, वो लोअर लेवल तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड to complete the target of 50,000 units per annum and authorize him to hire the required workers, decide their salaries and working condition। तब यहाँ पर आपने देखा कि डायरेक्टर ने जो है प्रोडक्शन हेड को 50,000 यूनिट्स बनाने का परमिशन जो है टास्क दिया, और ये अथॉरिटी भी असाइन की कि वो वर्क के अकॉर्डिंग वर्कर्स को डिसाइड कर सेलेक्ट कर सकता है, उनकी सैलरी वो फिक्स कर सकता है। The production head further share his responsibility and authority with the production manager to achieve the target and select the workers। अब यहाँ प्रोडक्शन हेड ने इसे प्रोडक्शन मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया इस टारगेट को, फॉर सेलेक्टिंग द वर्कर, फॉर अचीविंग द टारगेट। द प्रोडक्शन मैनेजर शेयर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सुपरवाइजर हु डायरेक्टली डील विद द वर्कर्स एंड अथॉराइज देम टू सेलेक्ट द वर्कर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कैसे अथॉरिटी एक से दूसरे के पास शिफ्ट हो रही है। This sharing of authority and responsibility between directors and production head, manager and subordinates will result in systematic distribution of authority at every level automatically। That is why we say systematic delegation leads to decentralization। और यही अगर delegation को restrict कर दिया जाता, सिर्फ production head या production manager तक ही सिर्फ रहता, तो हाँ ये complete decentralization नहीं होता। In delegation, the authority is shared between two persons only, manager and subordinate. Whereas in decentralization, many people at every level are involved, director, production head, manager, subordinates, etc। तो ये जो है आप इससे क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि डेलीगेशन दो के बीच में होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मैनी के बीच में होता है। Now the question is, it is necessary in every organization there will be a delegation but not decentralization, because decentralization is an optional policy। So delegation is essential part of every organization। हमने delegation का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें मैनेजर अपने पावर्स या अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है। No organization can work without using the concept of delegation, as there is no individual who can do all the work himself only। क्योंकि अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो ये वर्क को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता। डेलीगेशन इज ए टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर्स, whereas decentralization is required when an organization grow and expand and only top level cannot manage it। तो डेलीगेशन जो है जिससे हम वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करा सकते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, फैलता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सेटअप हो जाती हैं, और तब वहाँ पर सिर्फ टॉप लेवल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो बिजनेस को मैनेज करे। नाउ द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉलो द डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। Specifically in the present era, due to liberalization and globalization, fast decision is needed and quick decision can be taken through decentralization only, and it's provide greater flexibility and freedom of action, but still many organizations are working with the little or no decentralization। क्योंकि अभी जो है किस जगह पर क्या डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए। अगर हम सेंट्रलाइजेशन से चलेंगे तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। अगर वही डिसेंट्रलाइज पॉलिसी है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजर जो है वो कोई भी डिसीजन इमीडिएट ले सकता है। इससे क्या है, वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनीज जो हैं बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन को अपने प्रोसेस में यूज़ करती हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस and preference of top level management and not compulsory। So
Delegation is necessary but not decentralized. It is an optional policy. Now, see the case study. At Alpha Limited, all expenses, bills of employees are processed by general manager himself. He feels quite overburdened. He decides to delegate this work to deputy general manager, but after some time, the deputy general manager disperses this authority to various levels throughout the organization. Now, all bills for traveling are processed through respective department supervisors. Name the concept of management highlighted in above case before and after delegating the authority. तो अब आपने यहाँ देखा कि कैसे अथॉरिटी जो है डिफरेंट पर्सनस के पास शेयर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सो बिफोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज़ अ सेंट्रलाइजेशन, और जब यही अथॉरिटी कई लोगों के पास चली गई तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. Next one is Samir Gupta started a telecommunication company, Donera Limited, to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in its initial years. As the product was good and marketed well, the demand of its product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Samir Gupta, who was earlier taking all the decision for the company, had to selectively disperse the authority. अब देखिए उन्होंने कैसे अपने पावर्स को दूसरे के साथ शेयर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया. He believed that subordinates are competent, capable, and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decision. This paid off, and the company was not only able to increase its production but also expand its product range. Identify the concept by Samir Gupta through which he was able to steer his company to greater high. So this is a decentralization policy, and also explain three importance of. So you will write importance of decentralization in the as per the next lecture I will provide you. So after understanding the concept of centralization and decentralization, then the relationship between the this delegation and decentralization. So it is clearly from this discussion that the delegation is compulsory in every organization, because without delegation no work is performed effectively and efficiently. But decentralization is the choice, or it is an optional policy. It depends upon the decision of the top level management whether the top level management follow the decentralization or not.